तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता and notebooks आपके पास अवेलेबल है। Notes complete है last class में। So we will be covering very important part today. You can say the most important paragraph of introduction. Last class में हमने paragraph 9 तक खत्म किया था और paragraph 9 and 10, 8 and 9 कवर किया था हमने मेनली इंट्रोडक्शन का। अगर भगवद गीता का इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छे से समझ लिया तो बहुत कुछ हासिल हो गया भगवद गीता। प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली सारी बातें कवर कर दी हैं भगवद गीता इंट्रोडक्शन। यदि आप देखें तो हमने लास्ट क्लास में जो पैरा 8 और 9 कवर किया था, पैरा 8 में था द मूड इन विच भगवद गीता शुड बी रेड। व्हाट वाज द मूड? आई एम नॉट इक्वल टू कृष्णा, कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, कृष्णा इज नॉट ग्रेट पर्सनालिटी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। At least theoretically, Prabhupada says, at least theoretically accept. At least theoretically कम से कम accept तो करिए। अभी conviction नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसी को हम कहते हैं submissive spirit. Theoretically भी इस बात को accept कर लेना that Krishna is the supreme. This is called submissive spirit. And with this submissive spirit, theoretically you accept. You try to understand Bhagavad Gita, then you will be able to understand with this submissive spirit. And when you understand Bhagavad Gita, this conviction will come that Krishna is supreme. If I move ahead, online में आवाज clear है मेरी?
Okay. Then paragraph 9 was purpose of Bhagavad Gita. अगर शॉर्ट में देखें तो ये मैंने चार्ट बनवाया था, असत टू सत, a transformation of mind, from shifting your mind from a temporary way of living, shifting your mind from a temporary uh, existence to the eternal existence. That is the purpose of Bhagavad Gita. That was described in paragraph number 9. और ये paragraph 9 हमारा कौन सा था, आप लोगों ने मार्क किया? पैराग्राफ 9 फिफ्थ पेज के एंड में था, भगवद गीता इंग्लिश भगवद गीता। और मैं वैसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जस्ट व्हाट इज भगवद गीता। ये जस्ट व्हाट इज भगवद गीता, इसको पैराग्राफ 9 मार्क कर लीजिए। अच्छा, एक बार मैं पैराग्राफ्स आज के डिस्क्राइब कर देता हूँ कौन कौन से कर रहे। जस्ट व्हाट इज भगवद गीता वाज पैराग्राफ 9, वी कवर्ड इट इन लास्ट क्लास। देन ये जो दो है ना, आउट ऑफ सो मेनी ह्यूमन बीइंग्स, yes, out of so many human beings, this is paragraph 10, out of so many human beings वाला जो पैराग्राफ है यहां से, this is paragraph number 10 we are marking। इसके बाद जो अगले दो पैराग्राफ्स है, लॉर्ड कृष्णा डिसेंड स्पेसिफिकली एंड बीइंग एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड, इन दोनों को एक कॉमन पैराग्राफ मार्क करिए, पैराग्राफ 11, पैराग्राफ 11। And the subject of Bhagavad Gita, the subject of Bhagavad Gita entails the comprehension of 5 basic truths. This is paragraph 12. मार्क कर लिए। आज हम 10, 11 और 12 को कवर करेंगे और बहुत कुछ है इसमें। तो आप लोग अपने रजिस्टर्स में एक पेज पूरा खाली छोड़ सकते हैं पैरा 10 और 11 के लिए, वो मैं बाद में करवाऊंगा। पहले आई विल गो टू पैराग्राफ नंबर 12, क्योंकि इसका काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है। पैराग्राफ 12 का थीम लिख लीजिए, 5 बेसिक ट्रूथ्स ऑफ भगवद गीता। फर्स्ट वी विल कवर दिस, अगर टाइम मिलेगा then we will go to paragraph 10 and 11. 5 basic truths of Bhagavad Gita. This is paragraph number 12. The 5 basic truths of Bhagavad Gita. All right. The first basic truth of the Bhagavad Gita is, पहले हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रॉपर चार्ट बनाएंगे। ईश्वर, सेकंड इज, आज हमारा अंडरस्टैंडिंग ये 5 बेसिक ट्रूथ्स पे जाएगा। प्रकृति, 5 basic truths of Bhagavad Gita. ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म एंड काल। ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म एंड काल, the 5 basic truths of Bhagavad Gita. करें कंटिन्यू। ईश्वर, ये देख लीजिए फिर बनाइएगा, समझ लेते हैं पहले सारी बात। ईश्वर, ईश्वर मीन्स supreme controller, someone who controls. So who is Ishwar is described in Brahma Samhita. If I see, it is Bhagavad Gita के भी कुछ श्लोकास मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, and ब्रह्म संहिता के भी।
पहला ही श्लोक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, someone who has created. He himself is calling Ishvara Param Krishna. So Krishna, who is Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful spiritual body. He is origin of all. He has no other origin. And he is the prime cause of all causes. This is Ishvara. Then when you go to, so here you can, I'll just mention Brahma Samhita. First shloka is Ishvara. Then when you go to this Bhagavad Gita 10.8, it says, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante ma buddha bhava samanvitaha. Krishna says in Bhagavad Gita, पहले ब्रह्मा कंफर्म कर रहे हैं, now Krishna says, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So I am the source. In Bhagavad Gita 10.8, again it is described. There are many other places. I am giving some basic shlokas. Bhagavad Gita, Brahma Samhita, first shlok, and Bhagavad Gita 10.8 declared Ishwar Kwana. So who's the creator? Actual creator is not Brahma. Actual creator is Krishna. Krishna is saying himself. And Brahma is also glorifying Krishna, Ishvara Param Krishna, Satchidananda Vigraha. So now, Ishwar ke control mein, there is Prakriti. This was the first basic truth that is described in Bhagavad Gita at numerous places, at a lot of places. Bija, Pradapita, bahut jagah Bhagwan ne bola that I am the seed giving father. I am the controller. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Praja. Leave everything and surrender unto me. I am the controller. बहुत जगह. Ma Shuchaha. Don't be fearful. Don't worry. Don't fear. Ma Shuchaha. Nanu Shochanti Panditaha. There is nothing to fear. Many places. Ma Shuchaha. Nanu Shochanti Panditaha. Many places. There is nothing to fear. I am Ishwar. Surrender unto me. There is no other scripture in the entire creation that claims, where someone is claiming that I am the original creator. No one is claiming except Krishna and Bhagavad Gita. Now Ishwar, he controls Prakriti. एक बार देख लो, फिर बनाना है, एंड में इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है. Ishvara, he controls Prakriti. Prakriti is none other than Maya Devi, Durga herself. So Ishvara is Krishna and Prakriti is in control of Ishvara. Where do we find this? Prakriti is Durga, and Durga has three forms: Satogun, then Rajogun, then Tamogun. Among the three, the best is Satogun. Rajogun is passion. अगर इंग्लिश में देखें, passion.
Tamogun is ignorance. And Satogun is goodness. So these are the three modes of material nature. Prakriti means three modes of material nature. Like for example, I have to go in Mangal Arati. और पहला सिचुएशन है मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं सोते रहूंगा, मैं 6 की जगह 8 घंटे सोऊंगा, 10 घंटे सोऊंगा. दैट इज तमोगुण, इग्नोरेंस, स्लीपिंग अननेसेसरली. मुझे मंगल आरती जाना है, 4:30 मंगल आरती है, मैं 4-5 पे उठूंगा और जोरदार रश करूंगा, चाहे रास्ते में एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, बहुत रश करके मंदिर पहुंचूंगा. दैट इज विच गुण? रजोगुण. वर्स्ट इज तमोगुण, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा. Then next is Rajogun, that I want to go. When you are influence of Rajogun, I will go, but I'll wake up late and then I rush. And Satogun is just like example there. Satogun is you wake up timely, 15 मिनट एडवांस में, आराम से तैयार होके, properly slow speed पे you come to temple. So this is the basic difference you can understand between goodness, passion and ignorance. और वैसे ही उन पर्सन्स का कैरेक्टर होगा जो गुडनेस में रहेंगे, जो पैशन में रहेंगे और जो इग्नोरेंस में रहेंगे, वैसा ही कैरेक्टर होगा उस पर्सन. The third component, okay, now where does it come that Ishwar controls Prakriti, Krishna controls Durga? Where does it come? So Prakriti is controlled by Ishwar. So this is Bhagavad Gita. तो श्लोक मया दक्षिण प्रकृति कौन सा? 9.10. भगवद गीता 9.10 हम रीड करेंगे. निकालते जाइएगा श्लोक का साथ साथ. भगवद गीता 9.10. मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनामेन कौन्तेय जगत् विप्रीवर्तते. Translation: the material nature, prakriti, maya dakshena prakriti, the material nature which is one of my energies, who's saying? Krishna. So who is Shaktiman? Shakti is Prakriti. Who is Shaktiman? Krishna. The material nature which is one of my energies is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. So Prakriti is in whose control? In control of Ishvara. So how many truths of Bhagavad Gita we have covered like this? How many truths of Bhagavad Gita we have covered like this? 2. Ishvara and second is Prakriti. So the first basic truth is Ishwar, that is described in Bhagavad Gita. Who is Ishwar? Second basic truth is Prakriti. What is Prakriti? That is also described in Bhagavad Gita. Then comes the third basic truth, that is Jiva. Jiva. This Jiva is again under the control of Ishvara.
Prakriti is also under the control of Ishvara. And Jiva is also under the control of Ishvara. Now this Jiva, so this Jiva gets circumstances. This Jiva has a free will. What is the free will? The free will is whether I want to be a non-devotee or I want to be a. This is his free will. यहाँ तक free will है कि मुझे non-devotee बनना है या मुझे devotee बनना है, आस्तिक या नास्तिक, दोनों में से क्या बनना। और ये जो जीव है इसके लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं जीव में, दिस इज एज पर द past karmas. As per whatever are the past karmas, he will face some circumstances in life. All right. Now, if the person is non-devotee, some circumstances have come to him as a reaction of some past karmas. If the person is non-devotee, he can do two things. This non-devotee will come in the influence of Prakriti. Under the influence of Prakriti, whatever circumstances he is getting in life, under the influence of Prakriti, he can do two things. He can either do karma or he can do vikarma. That is totally under the influence of Prakriti. He can either do karma or he can do vikarma. So what is the difference between karma and vikarma? समझ आ रहा है यहाँ तक चार्ट? What was the first basic truth? Ishvara controls Prakriti. Prakriti has three subparts: Satogun, Rajogun, and Tamogun. Goodness, passion, and ignorance. Then the second part that Ishvara controls is Jeev. The Jeev has the free will to become a devotee or a non-devotee. If the Jeev is non-devotee, he will come in the influence of Prakriti. Then, under the influence of Prakriti, it will do either karma or vikarma. What is the difference between the karma and vikarma? Karma means doing the prescribed duty. In accordance with prescribed duty, I will do good karmas. Doing the prescribed duty as per the scriptures. Just the prescribed duty, karam kand basically. Doing the prescribed duty, I have to go to office, I have to go to school. He will just do that much. I will not do bad to anyone. This is mainly influenced by the three modes of Prakriti: Satogun, Rajogun, and Tamogun. कुछ लोग चैरिटी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, तो इट इज रजोगुण, कि गरीबों को खाना खिलाना है. गुडनेस, कुछ लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते हैं पर फिर भी सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं. That is mode of goodness. So a person who is a non-devotee will come under the influence of Prakriti and he will do either karma or vikarma. So what is vikarma? Vikarma will be bad deeds. In very straightforward language, simple language, बुरे कर्म करेगा. Breaking the four regulative principles: eating meat, fish, egg, intoxication, gambling, illicit sex. All this happens under the influence of Prakriti. So where do we get to know that we are working under, if you are a non-devotee, we are working under the influence of Prakriti? We get to know this in Bhagavad Gita,
I think 3.27. In Bhagavad Gita 3.27. प्रकृति क्रियमाणानि प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. Translation: The spirit soul, bewildered by false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. See, for a non-devotee, neither the circumstances that are coming in his life are in his control. The circumstances are as per the past karmas. And what he will do, this is basically under the influence of Prakriti, there will be reaction. Under the influence, there is an action. See, there is a circumstance that has come to you. Say, कहीं आग लग गई. Is circumstance. How you will react. That is under the influence of Prakriti. भैया ना तो आपके सर्कमस्टांसेस जो लाइफ में आ रहे हैं वो आपके कंट्रोल में, और आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने नेचर के अकॉर्डिंग. और उस नेचर को कौन इन्फ्लुएंस कर देता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं. ये किसके कंट्रोल में? प्रकृति के कंट्रोल. अगर मैं सतोगुणी होऊंगा तो मैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करूंगा. मैं रजोगुणी होऊंगा तो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करूंगा सर्कमस्टांस को. मैं तमोगुणी होऊंगा तो मैं हाय तौबा मचाऊंगा पूरे सर्कमस्टांस को लेकर. बस नॉन डिवोटी का यही तक रहता है सिस्टम जो ऐसा. Either he will do karma or vikarma under the influence of Prakriti. He will react. Neither the karma circumstance is in control nor the reaction is in control. How I will react, how I will respond to the situation. That also depends on my nature. पता है ना, हम देखते कई बार हर पर्सन का नेचर प्रिडिक्टेबल होता है. हम पहले ही बोल देते हैं इसके आगे अगर ये बात बोलेंगे तो इसका पक्का ये जवाब होगा. हमें भी पता होता है उसका क्या नेचर है. दिस इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि नेचर के अकॉर्डिंग ही पर्सन रिएक्ट करता है. होता है ना ऐसे. सभी सभी ने इस तरह की बात कभी करी होगी लाइफ में कि यार अभी मैं इसके आगे ये बोलूंगा ये चिल्लाएगा पक्का. नहीं, पापा के आगे जाकर ये बोलूंगा मानने तो वाले है नहीं, बोल के भी फायदा नहीं है. एवरीवन इज रिएक्टिंग एज पर. रिएक्शन में आपका कोई फ्री विल नहीं. फ्री विल आपका यहाँ पर है. यू वांट टू बी अ नॉन डिवोटी और यू वांट टू बी अ डिवोटी. इफ यू आर अ नॉन डिवोटी, you come under the control of Prakriti. Whatever circumstances will come in life, you will react. Either you will do karma or vikarma as per the mode, that is karma or vikarma as per the ruling mode. जो मोड आपके ऊपर इस समय क्या कर रहा है? रूल कर. कभी कभी ऐसे होता है हम किसी सर्कमस्टांस में होते हैं, बहुत जोरदार गुस्सा आता है, थोड़ी देर बाद ऐसे फील होता है ये अवॉइड हो सकता है, छोड़ भी सकते थे इसको, क्यों गुस्सा किया इस पे. फिर सिमिलर सर्कमस्टांस फिर से आएगा, फिर गुस्सा करेंगे. इट गेट्स रिपीटेड. दैट मीन्स इट इज ऑल हैपनिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रकृति. इट इज स्ट्रिक्टली हैपनिंग एज पर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रकृति. Then comes the case of a devotee. Then comes the case of a devotee. A devotee will work under the influence of Ishwar. Devotee will work under the influence of Ishwar. And this devotee will do, neither he will do karma, nor he will do vikarma. This devotee under the influence of Ishwar. What will this devotee do? He will do
Akarma. What is akarma? See, a circumstance has come to you as per your past karmas. If you are a non-devotee, you will work under the influence of Prakriti. You will do either karma or you will do pre-karma, vikarma, as per the ruling mood. You will you will do the prescribed duty, or you will do the bad deeds. Either of the two. If you are a devotee, then you will work under the influence of Ishwar. And when you won't work under the influence of Maya. प्रकृति के influence में फिर आप work नहीं करेंगे. किसके influence में work करेंगे? ईश्वर. And then you will do what? Akarma. What is akarma? Reacting in a way. Reacting in a way to get rid of Krishna consciousness. To get rid of birth and death. This is akarma. You will react in a way. कर्म का ये मतलब होता है. तीन चीजें होती है. क्या क्या? कर्म, अकर्म और विकर्म. कर्म और विकर्म आर नॉट गुड. What is good is akarma. Akarma means reacting in a way to get rid of birth and death. कौन बताएगा मैंने कितने ट्रूथ्स कवर कर दिए? 5 ट्रूथ्स थे. पहला कौन सा कवर कर दिया? ईश्वर. दूसरा कौन सा कवर कर दिया? प्रकृति. तीसरा जीव 2 टाइप्स के, फ्री विल में, डिवोटी और नॉन. चौथा भी कवर कर दिया, कर्म. कर्म भी तीनों तरह के आपको बता दिए. क्या क्या? अभी 3 तरह के कर्म कहां पे डिस्क्राइब्ड है भगवद गीता में? 3 टाइप्स ऑफ कर्मास आप यहाँ पे लिख सकते हैं. भगवद गीता 4th chapter 17th verse. 4th chapter 17th verse आप निकाल सकते हैं. कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणा. कर्मणो विकर्मणा आगे दोनों. तो कर्म भी आ गया और क्या आ गया? देखो पहला वर्ड क्या था? कर्मणो. कर्मणो ही अपि बोधाव्याम बोध्यावाम च विकर्मणा. कर्म भी आ गया, विकर्म भी. इसमें टाइप्स ऑफ कर्मास बताए गए इस श्लोक. अकर्मणाश्च बोधाव्याम. अकर्म भी आ गया. गहना कर्मणो गति. What does it say? Translation. The intricacies of actions are very hard to understand. Therefore, one should know properly what is action. Action means karma. Karma means doing the prescribed duty. What is action? What is forbidden action? Forbidden action means vikarma. And what is inaction? Inaction means akarma. Inaction मतलब ये नहीं है बैठ जाओ. Inaction means react in a way under the influence of Ishvara. React in a way to stop the repeated cycle of birth and death. Whatever is the circumstance, let it happen. I will do my duty and let me chant. I will do my duty and let me chant. This is what akarma. Akarma does not mean कि काम छोड़कर बैठ जाना. प्रभुपाद जी इस पर्पट में एक्सप्लेन करेंगे. Akarma means doing the actions in Krishna consciousness. वो भी कर्म है, but in Krishna consciousness. So हमने ईश्वर समझा दिया, हमने प्रकृति समझा दिया, हमने जीव समझा दिया. अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? काल. There is one more aspect. आप इतना बना लीजिए एक बार. नजर आ रहा है? या थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को समझने के लिए कि ये 5 बेसिक ट्रूथ समझे जाए. ऐसे ही ठीक था. दिस इज विच पैराग्राफ? ये लिख लिया था? ये लिख लिया था?
कैन स्टार्ट मेकिंग में थोड़ा नीचे कर दूंगा जैसे आप इतना बना लेंगे। नीचे कर दो थोड़ा। ये ऐसे एज इट इज कनेक्ट करना डिवोटी को ईश्वर से और नॉन डिवोटी को प्रकृति से। वेटिंग। दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ नंबर 12। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 4 कवर हुए हैं, एक रह गया। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? इस साइड बैठ सकते हैं ना, सब जल्दी नोट होगा। एरोज वगैरह ध्यान से मार्क करना। My question: Does for a devotee is the reaction controlled by Prakriti? For a devotee is the reaction controlled by Prakriti? No. It is under the influence of Ishvara. Neither the circumstance is in your control, nor how you will react is in your control. Both are not in your control. And still so much of ego. इतना ऊपर ऊपर का नोट कर लिया, थोड़ा नीचे कर दो। हर जगह श्लोकास कोट कर देना जहां जहां पे करेंगे। अब मुझे कंप्लीट कर दें तो मैं लास्ट में लेता हूँ। कोई लिख रहा है अभी ऊपर का?
ऊपर का भी कोई नोट डाउन कर रहा है? So circumstances are as per the past karmas, and the ruling mode is also whether goodness, passion, or ignorance. What rules you is also as per. So you will do karma or vikarma as per the ruling mode. And how's the ruling mode decided? Ruling mode is decided on basis of, again, see how vicious cycle. अभी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, अभी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो आपके पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग है, और अभी जैसे रिएक्ट करोगे उसे और कर्म क्रिएट होंगे। समझ पा रहे हैं? नॉन डिवोटी की लाइफ इतनी डेंजरस है। अभी जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो किसके हिसाब से? अभी जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो किसके हिसाब से? नॉन डिवोटी के लिए बात करें, पास्ट कर्मास के हिसाब से। और अभी आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो वो प्रिडिक्टेबल है, वो भी किसके बेसिस पर है? तो अभी जैसे रिएक्ट कर रहे हो उसे और कर्म भी तो जनरेट होंगे, वो अगले लाइफ में काम आएंगे अच्छे से। वो फिर से अगली लाइफ में सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे और रिएक्शंस क्रिएट करेंगे। आप कैसे रिएक्ट करते हो एंड यू विल बी एंटैंगल्ड। बट एज सून एज यू become a devotee, circumstances are definitely as per past karmas, but under the influence of Ishvara you react in a way to get rid of birth and death. So then you are out of this cycle of karmas. This is a complete science. Understand? Okay. Past karmas, current circumstances. Because of past karmas, current circumstances and current mode. And because of current mode, there is a way of reaction. And because of that reaction, further karmas and preparation for future circumstance. And future mode, nothing in our control. But if you are a devotee, then circumstances in your life as per your past karmas, but your reaction, your response, your reaction or response is Krishna consciousness. Then no further karmas. You understand? No further karmas. When that is called inaction. Akarma. Akarma means you are doing activity but no karmas. No karmas you are accumulating. कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे हो बाद अगले जन्मों। अब एक आखिरी चीज आती है जो ईश्वर के कंट्रोल में है। देखिए, एक था ईश्वर, एक थे प्रकृति, एक थे जीव, ठीक है, और एक था कर्म। कर्म मैंने तीनों तरह के इसमें कवर कर दिए, और एक है आखिरी है, किधर लिखूं, कैसे? ओके, यहाँ बीच में आपके पास खाली स्पेस है काफी या नहीं? नहीं है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो। ओके, फिफ्थ आप अलग से लिख सकते हैं। काल means time. What is time? What is time? The duration between rising sun and setting sun, and then again setting sun and rising sun. That is time. The duration between the rising sun and the setting sun,
and vice versa. This time is also under the control of so where is it described that it is under the control of Krishna? 11.32. Let us read 11.32. Duration between the rising sun and setting sun and vice versa is again under the control of Krishna. 11.32. निकालते हैं जरा. श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, Time I am the great destroyer of the three worlds. Krishna says, I am the Kal. Time I am the great destroyer of the three worlds, and I have come here to destroy all the people. So time comes to destroy. This is a basic trait of time. So with time, you are firstly your child, then comes youth, then middle age, then old age, then death. It is all the effect of time. And what is time? Krishna himself. So Krishna himself, with the rising sun and setting sun, he makes you older. And then you have to leave this body. So what happens? This time is under the control of Krishna. So what happens in case of non-devotees? Again coming back. And what happens? What time does to devotees? Time non-devotees के साथ क्या करता है और devotees के साथ क्या? अब non-devotees के साथ क्या करता है वो तो भगवान ने बता दिया. भगवान क्या बोल रहे हैं? अच्छा सुनो और पढ़ते आगे. The Supreme Personality of Godhead said, once again, let us read this. This is very important. Time I am the great destroyer of three worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both the sides will be slain. सब मरेंगे पर 5 भक्तों को छोड़कर. ये भगवान बोल रहे. प्रभु जी भक्त नहीं मरेंगे. पता नहीं कैसी अंडरस्टैंडिंग है. मरना तो सबको है. प्रभु भगवान क्या कह रहे हैं? टाइम आई एम. भगवान यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं. आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल. मैं सबको मार डालने के लिए आया हूं, पर मैं छोड़ दूंगा. मैं किसको छोड़ दूंगा? डिवोटीज को छोड़ दूंगा. 5 डिवोटीज, 5 पांडवों को, बाकी सब मारे जाएंगे. तो थोड़ा हम इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर लेते हैं. So what does the time does to a non-devotee and what time does to a devotee? To a non-devotee, time simply kills the person, deteriorates the person, deteriorates, and ultimately kills the person. You understand? Time simply, with the effect of time, you will deteriorate. Today you have a good body, tomorrow you won't have. It is for sure. Nothing can stop it. Non-devotees के case में time simply deteriorates and ultimately kills the person. Same is the case of devotees. The time deteriorates and ultimately kills the person. But I want you to go through 3 shlokas. What happens in the case of devotees?
these 3 shlokas are in a sequence. What does that? फिर हम उसको लिखेंगे. Plus one more thing time does. एक तो ये इनको deteriorate करके मारेगा तो है. Plus I will go through 3 shlokas. Bhagavad Gita 2.40. What does time do? What does time do to devotees? Take out Bhagavad Gita 2.40. नेहाभिकर्म नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this endeavor, which endeavor? Of becoming a devotee. There is no loss or diminution. Body to deteriorate होएगी, but ultimately you won't be the loser. And a little advancement of this path can protect you from the most dangerous type of fear. What is that fear? Becoming an animal. In next life, adogati. So what does Bhagavad Gita 2.40 says? Time deteriorates and ultimately kills the person is same for both the cases, devotee and non-devotee. But a little advancement on this path. Bhagavad Gita 2.40 says. Here, the next life is, come on, the next life is animalistic. But Bhagavad Gita 2.40 says, Krishna protects. From greatest fear. टाइम के साथ मरोगे तो सही. 2.40 कह रहे हैं, there is still no loss. Still Krishna protects from greatest fear. What is the greatest fear? Becoming an in upcoming year. Still no loss. You will die, still no loss. That's the best part. Then coming to Bhagavad Gita 9.31. What further? Let us see. Correct? With time, what will happen to devotees? निकालो. 9.31. With time, what will happen to devotees? Again, Krishna is declared. पिछले में बोला there is no loss. यहाँ क्या हो रहा है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाति जानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति. What happens to a devotee? He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly. Declare it, my devotee never perishes. Externally, you may see that the body is deteriorating, but the devotee will never perish. In next life, he will again become devotee, and he will complete his bhakti. What will happen when he completes his bhakti? That will be told in Bhagavad Gita 9.34. चलिए पहले हम ये complete करते हैं. What does my devotee? With time, what does Krishna says? With time, my devotee perishes or not? My devotee. So Prabhuji, with time word तो कहीं था नहीं, आप अपनी मर्जी से क्यों जोड़? What is the meaning of this word never? Never means कभी नहीं, मतलब कभी वो समय नहीं आए. So with time, my devotee never perishes. With time, my devotee never perishes. So, okay. This was the beginning phase. Krishna assures in second chapter. Okay, with time you will deteriorate and you will die.
but still no loss. I will protect you from fear. You won't become an animal. Then Krishna further says, with time my devotee never perishes. कभी वो सड़ेगा नहीं. Then Krishna further says in Bhagavad Gita 9.34, what is the ultimate destination for such a devotee? What is the ultimate destination? I'll take out Bhagavad Gita 9.34. मन्मना भाव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्त्वेवाम् आत्मनां मत्परायणः. What does Krishna says here? Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me with time. You will come to. This is what time does to devotees. They take them back to Krishna. What does the time does to a non-devotee? It makes him animal. What does the time do to a devotee? Take it back to Krishna. Time is Krishna himself. Krishna may make you animal. Krishna may take you back in his Godhead. Logical enough? So what is finally 9.34? Someone who gives his mind to Krishna. Main thing is mind. Someone who gives mind to Krishna is the best thing to give to Krishna. Your mind. Engage your mind in me. Manmana bhavo madbhakta. Someone who gives mind to Krishna. Krishna. What is the correct word? You will surely come to me. Surely again. Surely. There is no doubt. Krishna will take him back to Godhead. So these are the 5 basic truths of Bhagavad Gita. Absolutely clear. First is Ishvara. Ishvara controls Prakriti. Ishvara controls Jiva. And Prakriti 3 गुण हैं. Jiva के free will के according he can become a devotee or non-devotee. Circumstances are as per the past karmas. But if a person is non-devotee, he will either in reaction under the influence of Prakriti, he will either do karma or vikarma as per the ruling mode. Satogun, Rajogun or Tamogun. And ruling mode is again decided on the basis of. So what are the circumstances and how you will react? Both will be as per past karmas, which will create further karmas. And again you will suffer. But a devotee, in such a case, what is it? Akarma. Akarma means reacting in a way under the influence of Lord, reacting in a way to get rid of the. This was the complete explanation of 4 and 6. Time is the duration between rising sun and setting sun and under the control of Krishna. What is it present when time is under the control of Krishna? Like Krishna says, I am time. The non-devotee, devotee, how does the time react? To non-devotee, time is an animal. To devotee, you will deteriorate and ultimately die. But still loss 2.40 and what never perishes 9.31. 9.34 says give. Okay, any confusions? Quick questions? I can see. मुझे non-devotee प्रकृति के influence पे रहता है.
और ईश्वर प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, वो कुछ मतलब एक प्रोबेबिलिटी। ईश्वर डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करते नॉन डिवोटी के साथ, प्रकृति के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं, और प्रकृति फिर पूरी तरह कर्मों के हिसाब से चलाती है पर्सन। एक लास्ट ये था कि आज के टाइम में बहुत लोग रावण जैसे है कि मतलब एक रावण एक तरफ शेप ऑफ बहुत बड़ा, वो एक डिवोटी का नेचर है, और दूसरी तरफ वो एक तरह से पाकिस्तान या एनजीओ के नेचर है जो कि नॉन डिवोटी का नेचर है। तो इसमें वो फिर किसके, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। इनका क्वेश्चन ये है कि नॉन डिवोटी और डिवोटी का बीच का जो ग्रे एरिया, आई एम सॉरी, ऑनलाइन में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कट गई थी प्रभु जी। पता नहीं चल रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी फिर से नहीं आ रही। पर्सनालिटीज वो सब कर सकते हैं जो भगवान के इनर सर्कल में, नारद मुनि कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस? ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है प्रभु जी, बीच में कट गई थी। कितनी देर पहले बंद हुई है? 5 मिनट पहले बंद हो गए थे। अच्छा, 5 मिनट पहले बंद हुआ। स्टार्ट किया था तब